question hour. Now, Sri Sasmit Patra will preside over the question hour today. Is retiring this thing. 286, Sri Neeraj Shekhar. क्या 286? Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. सभापति जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग जगत के बेहतर सहयोग पर जोर देता है। यूजीसी के चेयरमैन के हाल के एक बयान के अनुसार इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिना किसी पीएचडी या एनईटी के डिग्री के विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के रूप में लैटरल एंट्री ले सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लैटरल एंट्री वाले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी या नहीं, और किन किन विषयों में यह लैटरल एंट्री अलाउ करने का सरकार का प्लान है। Honorable member has raised a relevant question. So, regarding this, Ministry of Education has already framed guidelines in the year 2015, and iske baare mein what is the purpose of this? The purpose is to encourage quality and involvement of academicians, scholars, practitioners, policy makers, and to make a robust collaboration between the academia and industry. And in these, definitely there are some guidelines, and the guidelines are, usually they have to be reputedly qualified. It may be they may have MTech or PhD, but they should have the experience of 15 years. They may be reputed scientists, scholars, industrialists, and primarily they have to take the decision from the department. Then department will send it to a committee, and the committee is consisting of the director of the institution, head of the concerned department, dean, and the dean research and consultancy, dean academic affairs, representative of the Senate from the postgraduate institution. And this is a robust mechanism, and it does not hamper the sanctioned post of the UGC. This is very important. Thank you. Second supplementary. मेरा दूसरा सवाल यह है सरकार से कि इस संबंध में फैकल्टी रिक्रूटमेंट के रूल्स और को रिवाइज करने के लिए कोई कमेटी का गठन हुआ है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? Honorable Minister. हाँ, Honorable सभापति महोदय, माननीय सदस्य, he has expressed his anxiety, but I have already given the answer in my previous answer. There is a definitive mechanism by the Ministry of Education guidelines and also from the University Grants Commission. And there is a committee, the departmental procedure, and they will send. And everything is in this. What will be, how many times he has to come, and what will be his remuneration, that remuneration on the visit basis, and extreme limit, maximum limit, it should not cross 1,20,000 per month. Thank you. Shri M. Thambudireji. Chairman, sir, the minister explained and give the detail regarding the qualification of the professors appointing the universities. Sir, there is a danger in this, what the minister's policy said, because the qualification is very important. MA or MSc or BTech, MTech, PhD. PhD is the very essential thing for teaching profession, because teaching profession involves the research also. That aptitude must be there, that
qualified person to come and teach. Sir, industry experience may be there. Nowadays, even IAS officers, so many people are getting PhD. There are chances to get member, a PhD. the question, please. Therefore, sir, I'm telling you, sir, when there is a chance for getting such kind of PhD qualification, the experience can be, you can relax. Which teaching experience? The industry experience you can take. Suppose if it in agriculture is, somebody is there, is also doing that, without thinking whether you will appoint as a professor there, an agriculture man in that department. Therefore, it's a dangerous thing. Qualification PhD must be essential, encouraging, but the experience is different, which can be relaxed, that can be used for the industry or any other person. Whether the minister will consider on this, sir. Honourable Minister. I would like to clear the honourable senior member. He has raised a good question, but at the same time, we have made a robust mechanism. How? That there should be, they should have the degree, but we have given the relaxation for what? They may not have PhD, but they have the vast experience. And the purpose of this is, there should be, let me finish, there should be the bonding between academia and the industry. And the requirement of the industry should be known to the academician. And similarly, not only it is a one-way traffic, sir, this is a both-way traffic. Even the academia can go to the industry, so that industry may be enriched. Thank you. Shri S. Selva Ganapati ji. Thank you, Chairman, sir. The Minister has given clear view that the selection is being done by the committee. My question is, how do the committee evaluate the teaching ability, and how do they follow any selection procedure? Even the PhD holders are expected to clear UPSC without any educational background. And how are they being selected by the committee? What is the procedure is being followed? Honorable Sabhapati Mahoday, honorable member has raised a good question. Definitely, selection process is a very well experienced and well examined. First of all, the respective department of the institution will take the names, and their names will be given to a committee. And committee is consisting of director from the institute, head of the concerned department. They will not any anpar admi ko nahi lenge. Who is in the industry, and well educated and well experienced, at least 15 years experience. And they are reputed in their field, in the science, arts, and everywhere, in the scholars. But at the same time, during teaching, yes, what you have, honorable member has expressed his anxiety, that is regarding the teaching will be done by the academician and the professor of practice. Thank you. Professor of practice and professor of the theory. Both will teach the students. Thank you. Dr. V. Sivadathan ji. UGC has reduced lot of microphone, please. There's a microphone next. Yeah. UGC Sir, has, please repeat again, sir. Respected Chair, UGC has reduced lot of fellowship, including SC/ST fellowship, minority fellowship, and S. Radhakrishnan fellowship. This kind of fellowship already has been reduced. So, my question: government has whether government has any plan to restore this fellowship? This is my question. If government is restored, that will help the student community. Honourable Minister. He has expressed regarding the fellowship, but today's question is on the professor of practice and adjunct professors. I will give it to the member separately. Question 287, Shri Prakash Javadekar ji. Question number 287. Honourable Minister. First supplementary. एक अच्छी बात है कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है एजुकेशन में भी, स्किल में भी और एम्प्लॉयमेंट में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले 7 सालों में कितने नए आईटीआई या महिला कितनी सीट्स बढ़ी आईटीआई में और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स? Honourable Minister.
हमारे माननीय सीनियर संसद सभ्य श्री ने महिलाओं में रोजगारी और एजुकेशन बढ़े, इसलिए बहुत ही अच्छा आज सवाल पूछा है। जैसे महिलाओं के लिए स्पेशल वुमेन ITI, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मोस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने खोल दिए और उसके बाद वो ट्रेन होके अपनी तरह से वो आत्मनिर्भर बने, इसलिए एक सब जगह हमने मोस्टली ITI खोल दिया। फिर भी कोई जगह अगर नहीं है तो माननीय संसद सभ्य से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी डिमांड मुझे मंत्रालय में भेज दे, मैं वहाँ ओपन करवा दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। ITI में फिर से एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जानकारी है, नहीं तो बाद में लिखित भी दे सकते कि कितने नए ITIs खुले, क्योंकि बहुत खुले हैं, और इसमें महिला सीट्स कितनी बढ़ी है, क्योंकि दैट टेल्स द स्टोरी of what has actually happened on ground. Honorable Minister. With your permission, sir, firstly, let me compliment you for your diligent service to the House. Thank you. And as the erudite senior colleague knows, that this government is committed to emancipation of women, especially through skilling. And skilling has various components to it. Apart from the intervention by the government under the Pradhan Mantri Kaushal Yojana, there is over 6 million women who have not only been trained through ITIs, but also the Honourable Member has served our country as Minister Education and knows that such services have been provided for skilling through commissions such as the UGC with BVOC, which has been the Bachelor of Vocational Studies, which has been professed through various universities and college systems in our country. Insofar as skilling, one of the greatest skill sets today in modern India that women particularly can celebrate is the digital literacy campaign that the Honorable Prime Minister has started under a program called PM Disha, where over 4 crore Indians have been digitally made literate, of which 54% are women. The Honorable Member has also positioned himself to support emancipation of women economically, and hence would like to celebrate the fact that this is a government which for the first time has ensured gender responsive procurement, so much so that now PSUs in our country have been directed that up to 3% of their procurement has to be done from female entrepreneurs, including GEM, which has now over 1.2 lakh women who are registered as entrepreneurs so that they can sell their wares to governments at the center and in the state. Mananiya Mausam Noorji. Sir, a recent study has shown that 21% of India has one of the lowest female participation rates in the world, which is quite concerning. So many women in the country work in farming, help the grocery store, work at home for their families, and this is unaccounted for in the stream of economy. So my question would be, what are the steps taken to recognize the unpaid labor of women who work full-time at home or outside? Honorable Minister. The Honourable Member, sir, highlights a conversation that has been an issue of reflection for many research bodies, think tanks, and also esteemed Member of Parliament, apart from those who serve across various governance and administration levels in our country. That unpaid work needs to be economically supported is an issue of great deliberation and debate. For instance, what is it that is denoted as unpaid work? The level of care a mother gives to a child. Now, as a mother to 2 children, can you economically quantify the amount of time I spend or the love and care that I give to a child? That is why today, when we talk about unpaid work, it varies from the amount of time a woman spends giving to her own husband. It varies from the amount of time she gives to her own children or to the elders in the family. However, much has been debated on this and needs to be recognized that wherever there are formal opportunities of recognizing female labor participation, the government has been more than aggressive. For instance, today, if you look at Manrega, out of the 193 crore person days of work that has been generated, I can proudly say that over 54% of those who have been employed are women. When I spoke about GEM registrations and 1.2 lakh women who have been receiving opportunities to engage with regards to their enterprise with the governments at the center of the state, I'm also mindful of a senior colleague who's seated right behind me,
who supports ably under the leadership of the Honorable Prime Minister self-help groups in the country, where over 7 million self-help groups have received over 5 lakh crores of rupees so that at the grassroots they can give birth to enterprise. Minister. Srimati Sampatia Uikeji. आपके माध्यम से जानना चाह रही थी माननीय मंत्री जी से कि मुद्रा लोन योजना के तहत पे आदिवासी महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान एवं छूट रखी गई है क्या, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें? धन्यवाद. Honourable Minister. The Honourable Member would be happy to know that of the 32 crore loans that have been given under the Mudra Yojana, 68% of beneficiaries have been women, predominantly from the SC/ST community and minority families. It is a matter of great joy, sir, particularly because before 2014, when we spoke about female enterprise in our country, one of the greatest challenges that begot women who wanted to be entrepreneurial was the access to credit. It is a compliment to the Honourable Prime Minister's leadership that over 23 crore women for the first time in their lives now have access to a bank account. They have approached formal banking institutions, presented their business plans and received 68% of the support out of the Mudra Yojana, which was not gender inclined, however was to support small businesses. And sir, through you, I'd like to tell the House and the rest of the country that when you look at NPAs, women have had less than 1% NPAs. So it is great investment when you support a woman financially. Shri M.M. Abdullah ji. Pani Abdullah ji. Thank you, Vice Chairman, sir. My sub-question arises from the Minister's answer on question number 287C, whether the Union Government evaluation of benefits occurred to women due to Mudra, that the Shishu category sufficiently support the development of the micro enterprises sector. Thank you. Reflection of the Honourable Member, because I think it brings to light a debate that is much needed in the country. Should we suffice and take glory in only the entry-level flooding that we see in the SME segment? I think our ambition now as a nation should be that we help women transition from the SME segment to mid-sized companies. And for that, the government has ensured that under the Stand Up India Yojana, women get, particularly in every district, there has been an intervention of the Honourable Prime Minister that up to 1 crore loans to be given to such female enterprises by every bank. And I'm proud today to say that even in Stand Up India program, 80% of the beneficiaries today are the women of India. Question 288. Not present. Honourable Minister. Manya Shri KTS Tulsi ji, your question. No, your supplementary questions. Mine is 288. Supplementary. No, your supplementary question, sir. 288 is Sushil Kumar Gupta ji. He's not present. You have asked for a supplementary. Everybody knows that the existing norms in India with regard to safety of cars are non-existent. We have only the global new car assessment program to lean on, but we need to have Bharat new car assessment program. Only I think then the microphone is not. Is your microphone on? Sufficient safety. The microphone. इधर आ जाओ. आगे आ जाओ. आप आगे आ जाओ. You will not. On. Yeah, now it's on. Now it's on. Yes. Sorry, sir. Sir, the safety norms in India with regard to cars, new cars, are virtually non-existent. The global new car assessment program is not followed, and Bharat new car assessment program is yet to come in. This becomes important because for the safety of occupants and pedestrians. It is a matter of great regret that in 2009, India witnessed record pedestrian deaths at 25,858. Question, please. And this will happen only. When are we going to have the Bharat new car assessment program? Honourable Minister. The norms are already notified by Ministry of Road Transport, and Bharat NCAP will be above and over crash standards
will improve competition. Honorable Chairman, sir, all over in the world, in South Korea, USA, and European countries, they have already standards are already fixed. Now this is the need of the hour. Honorable member is absolutely correct. Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. For that reason, we are now taking a lot of measures. That is compulsory 6 airbags now mandatory, and by which it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. I am giving you just a chart. The 25,289 people were killed in head-on collision in 2020, and 30% of lives in frontal collision can be saved by airbags alone. So that's the reason we have instructed the order. In 2020, 8,598 lives could have been saved in head-on collision with the use of airbags. Similarly, side collision caused 14,271 deaths. 31% of lives could be saved by the use of side airbags, and 424 lives could have been saved in 2020 with the use of side airbags. A total of 13,022 lives could have been saved. The functional airbags were present in the vehicle involved in frontal and side crashes. Sir, I want to explain properly that we are taking, as far as this Bharat NCAP, we are going to start it, we are in the process, we are already notified, by which structural safety, the stiffness of the vehicle structure, safety of adult occupant, crash test, safety of child occupant, safety of the child placed in a child seat, assessment of car for pedestrian-friendly design, bonnet and bumper design, provision of active and passive safety assist technologies, 6 airbags, 3-point seat belts, seat belt alert, electronic stability control, anti-lock braking system. Sir, by all this reason, we want to protect the life of the people, and that is the reason that we are now going to start this rating system in India, which is going to improve qualitatively the automobile sector of the country. At the same time, it will be more useful to make more export from the country, create more employment potential and a growth for the country. Thank you. Mananiya Shri Kamakhya Prasad Tasaji, you have asked for a supplementary question of 288. Okay, you're not. Mananiya Shrimati Rupa Ganguly ji. Thank you, Honorable Chairman, for allowing me to ask this supplementary question. ये BH सीरीज़ के बारे में बहुत जानकारी लेना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर. बहुत सारे मैं खुद वेबसाइट में गई, लॉगिन करने की कोशिश की, तो नई गाड़ी की तो अब 21 के बाद से शुरू हो चुका. पुराने गाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भारत सीरीज़ में किस तरह से हम पुराने गाड़ी को भी जो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने जो उनका इंजन्स अच्छे हैं, कैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिकॉज गाड़ी नए है और वो फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा नहीं, जो अगर कल नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी तो नए है सर. थैंक यू. थैंक यू सर. ऑनरेबल मिनिस्टर. सर, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है. सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट. These are the rules and regulation for only for new vehicle. For the old vehicle, it is very difficult mechanically to make them competent. सर, हीरो में भी ये होता है, एक बार हीरो का रोल करने के बाद कैरेक्टर रोल करना पड़ता है, फिर हीरो का रोल नहीं मिलता. माननीय श्री जी.के. वासन जी. Electrical scooters are encouraged because of pollution. People are interested to buy, sir, but sometimes, sir, safety concern is very important. Nowadays, we see a lot of news in the papers that electrical cars and scooters burn suddenly, and 1 or 2 deaths also has been taken place. So, to give confidence level to the public to buy electrical cars and electrical scooters, manufacturers should be doubly, triply careful, sir. The government should take necessary steps for this to give confidence to the people to buy electrical vehicles. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, actually for the new electric two-wheelers, electric three-wheelers, electric cars, already we have taken decision about the quality, and where we are very much punctual about how we can maintain the safety of the people. And already as far as the star rating, the electrical manufacturer are also supposed to make their vehicle up to that standards.
And whatever the international standards available in the world, on the same standard, they have to manufacture the vehicle. Either it is electric, either it is petrol, either it is diesel, or either it is on green hydrogen or any fuel they can use. But the safety standards are already fixed. Sir, actually, last question, my comment was very, it's not against anybody. Don't take it in a light way, sir. Question 289, Shri John Britasji. Question number 289. Honourable Minister. First supplementary. Sir, I am disappointed with the answer. As you can see in the answer, under the National Social Assistance Program, that is NSAP, sir, hardly 200 rupees monthly pension is granted to hapless people who are below poverty line. Sir, we all will become old and ill. Sir, you look so young, but one day you will also become aged. And the maturity of the society, will be assessed by the benevolence we show to the old. Question, please. Sir, my question is that the 200 rupees pension that has been fixed for those people who are below poverty line has been fixed long back, almost 10 years back. Considering the stagnant position of this pension and inflation, will the government yield to the demand of increasing this meager pension? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक वृद्धजनों और दिव्यांग और विधवाओं से संबंधित ये प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि 200 रुपया मैं जब पूरे देश का डाटा देखती हूँ, उसमें महिलाओं को 300, वृद्धा महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को 300 और वृद्धों को 200। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो राज्य इसमें चाहते हैं बढ़ोतरी, वो बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। कई राज्य हैं जहां 2000 से ऊपर दे रहे हैं, कई राज्य हैं 1500 दे रहे हैं, तो राज्य इसमें चाहे तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन महोदय 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो पैसा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ और भी ऐड हुआ है। मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2011 की जनगणना के जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, उनको मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, उनको आवास भी दिया जा रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर भी दिया जा रहे हैं। उन परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। Second supplementary. So the minister has been trying to say that it's a responsibility of the states. Are they, adding burden of the states without increasing the resource of the states? My question, second supplementary would be like this. Sir, will the government relax the conditions attached to this pension scheme? Now only those people who are under the poverty line are considered. And second thing is that... One question. So part B of the question is that the number of people who avail the pension and the yearly allocation for the same. Honourable Minister. उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, ये विषय बड़ा गंभीर विषय है। भारत सरकार ने इसके लिए थर्ड पार्टी एवल्यूएशन कराया। उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी है जो मैं राज्यों के पास भेजा हूं। लाभार्थियों की पहचान बीपीएल के स्थान पर सामाजिक आर्थिक गणना 2011 जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अभी तक हम बीपीएल से करते थे। वित्त पोषण की पद्धति में 100% केंद्रीय पोषण से बदलकर केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाए और पूर्वोत्तर का जो 90-10 है। मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राज्यों को हमने फरवरी में ये भेजा है। कुछ राज्यों का आया है टिप्पणी। जब ये राज्य के साथ मिलकर के वार्ता होगी, बातें होगी, तो निश्चित रूप से हम कोई नई सीमाओं को तय कर पाएंगे। यही मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी। माननीय उपसभापति महोदय, हम लोगों ने देखा है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, चाहे जिस वर्ग के हों,
बुढ़ापे में उनकी संतान भी उनका साथ छोड़ देती है, चाहे किसान हो चाहे अन्य लोग हों। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उनको वोट के लिए तो उनको तमाम पैसा दिया जाता है, तो जो वोटर्स है जो वोट देता है पॉलिटिशियन को, तो हमारा सवाल ये है कि क्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वोटर्स हैं, सभी वोटर्स को जो है पेंशन जो है 500 से बढ़ा के 1500 रुपये दी जाएगी? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मुझे लग रहा है क्वेश्चन से और चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग के मुख्य गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले वृद्धों के लिए विषय चला है। और ये बात सही है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है वो राज्य अपने स्तर से समझती हैं और उसको ऐड भी करती हैं। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। सर, मेरा सवाल बस यही है आपके माध्यम से कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स जो रिटायर हो गए हैं उनके इंटरेस्ट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स पे वो भी कम होते जा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पे किसी तरीके की स्टेप्स लेगी जिससे आने वाले समय में, जो अब बार बार हमें जवाब दे दिया जाता है, जैसे मैं बजट के में भी रिक्वेस्ट की थी, जवाब ये दे दिया जाता है कि बैंक लोन भी तो उपलब्ध हो जाता है कम इंटरेस्ट रेट पर, उस उम्र में सीनियर सिटीजन्स के पास और कोई उपाय नहीं है कि जाकर लोन लें? कैन देयर बी सम मेजर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड टू बी एबल टू मेक देयर लाइफ अ लिटिल इजियर कंसिडरिंग द हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड लो सेविंग्स इंटरेस्ट? ऑनरेबल मिनिस्टर। पति महोदय, हमारी एक बहन ने क्वेश्चन इस विषय पर पूछा है। रिटायरमेंट होने वालों को तो ऑलरेडी पेंशन मिलती है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हो। ये शुद्ध रूप से उन लोगों के लिए है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, वो राज्यों को सूचित कर दिया गया। थैंक यू। माननीय श्री महेश पोद्दार जी। महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत सहृदय हैं और बड़े दिल वाले हैं, इनके बहुत वक्तव्यों से लगता है। महोदय, ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पहला। दूसरा, इसमें भी उम्र का भेदभाव, 79 वर्ष तक वालों के लिए 200 रुपया, ऊपर वालों के लिए 500 रुपया। क्या मैं महोदय से आग्रह कर सकता हूं उन गरीबों के लिए, गरीब वृद्धों के लिए, कि कम से कम उम्र की सीमा तो खत्म कर दी जाएगी और वो चाहे जितना देना चाहें एक समान रूप से सारे वृद्धों को, सारे गरीबों को देंगे, जो मोदी सरकार भी इस मामले में बहुत श्रद्धेय है। महोदय। माननीय मंत्री। मैंने पहले ही सदन को कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की सरकार है और राज्य से हमने मांगा है और राज्यों के साथ मिलकर के जब कोई एक नई स्थिति बनेगा तो जो माननीय सदस्य ने रखा है वो भी उसमें विषय आएंगे। सारी विषयों को समाहित करते हुए राज्य के साथ मिलकर के ही हमें करना होगा, चाहे प्रियंका जी का विषय हो चाहे इनका विषय। क्वेश्चन 290 श्री सुशील कुमार मोदी जी। Only the question number. Honorable Minister. उत्तर सदन पटल पर रखा गया है। First supplementary. उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि there is a 17 seat quota that is known as a sponsoring authority quota in each and every केंद्रीय विद्यालय that is being used by the district collector। तो ये जो 17 का कोटा प्रति विद्यालय में, हर एक विद्यालय में 5 इन क्लास 1, हर एक सेक्शन में 10 इन ऊपर में एंड 2 डिस्क्रिशनरी कोटा, सो दैट कम्स अबाउट 22,000, जिसमें न तो कोई मेरिट है न कोई रिजर्वेशन है। तो मैं माननीय मंत्री से यह को सुझाव देना, आग्रह करना चाहूँगा कि जो 22,000 स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का जो कोटा है, क्या सरकार इसको समाप्त करने का विचार करती है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से समय समय पर ये चर्चा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उठती रही है, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन से संबंधित। और अभी आपने देखा पिछले दिनों लोकसभा में भी ये चर्चा हुई है और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने नियमन दिया है चेयर से कि सभी
नेताओं का, सभी दल के नेताओं के साथ एक विस्तृत इस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं आदरणीय सदस्य से ये कहना चाहती हूँ कि ये लगभग सभी की ये चिंता है, तो विभाग ये तय किया है आपकी सभी के साथ चर्चा करके, और जैसा आप सबका निर्णय होगा विभाग गंभीरता से इस पर विचार करेगी। महोदय, मैंने जिक्र किया था स्पॉन्सरिंग ऑथोरिटी कोटा। This is not MP quota, this is sponsoring authority quota, which is different from MP quota. Now, my second supplementary कि मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना MP कोटा जो था वो उन्होंने MP मिनिस्ट्रियल कोटा जो था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करना चाहूँगा, यह सुझाव देना चाहूँगा कि MP कोटा को बढ़ाना संभव नहीं है। बढ़ा भी देंगे तो भी लोगों की नाराजगी बनी रहेगी। तो क्या सरकार मंत्री कोटा जिस तरह से समाप्त कर दिया है उसी प्रकार क्या MP कोटा को भी समाप्त करने का सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय तामदुरे जी, प्लीज प्लीज, सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज स्टार्ट। चाहे किसी भी तरह का कोटा जो आदरणीय सदस्य ने कहा है, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले भी इस पर मैं कही कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि आरक्षण नीति का पालन नहीं हो रहा है या अन्य और जो भी विसंगतियां हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निर्णय हो सदन का और सभी के निर्णय पर सरकार विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। माननीय श्री पी विल्सन जी। Deputy Chairman, sir. Honorable Minister, there is a complaint that the standard in Kendriya Vidyalaya has considerably gone down because you are employing teachers on contract basis. Will you fill the vacancies with regular recruitment? Honorable Minister. सभापति महोदय, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी चिंतित है और निश्चित रूप से ये सरकार भी चाहती है समय समय पर, जैसे जो नियुक्ति के संबंध में उन्होंने कहा, तो नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है हम विभाग उस पर विचार करती है और नियुक्तियां करती हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी गंभीर हैं और शिक्षा विभाग समय समय पर शिक्षा की और बेहतर कैसे किया जा सके, निश्चित रूप से आप सभी के सुझाव से हम और बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। माननीय श्री संजय सिंह जी। माननीय श्री संजय सिंह जी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो आदरणीय सदस्य सुशील मोदी जी के जवाब में उन्होंने, सर ये चल नहीं रहा, नहीं माइक्रोफोन चल नहीं रहा है। माइक्रोफोन ऑनरेबल मेंबर का प्रेमचंद जी का माइक्रोफोन स्विच ऑन कर दीजिए। आप अभी आप लोग ज्यादा तेज बोलता हो तो प्रॉब्लम होती है, माइक चालू कराते हो। ऑनरेबल मेंबर शुरू हो गया। माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के प्रति एक भरोसा, एक आकर्षण लोगों का है, इसके लिए आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूं। देश के सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलती है। इसके कारण से चाहे गरीब आदमी, सर पूरी गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, वो चाहता है केंद्रीय विद्यालय में उसके बच्चे का दाखिला हो जाए। सर तो मैं तो मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या केंद्रीय विद्यालयों की संख्या देश में बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है, नंबर एक। और क्या अगर आप संख्या बढ़ा रहे हैं सर, तो क्या आप जो सांसदों का कोटा है उसको बढ़ाइए, अन्यथा 10 के कोटा में सिर्फ नाराजगी के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। सर ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में कहा है, तो केंद्रीय विद्यालय खोलने का राज्य से प्रस्ताव आते हैं और कुछ चुनौती पद्धति है, उसके माध्यम से फिर कमेटी में जाता है, कमेटी उस पर विचार करती है, उसके बाद खोलने का निर्णय हम करते हैं।
और जहाँ तक बढ़ाने की बात है कोटा या समाप्त करने की बात है, तो महोदय पहले भी चूंकि इस पर बात हुई है, तो निश्चित रूप से इस पर फिर से हम यही कहेंगे कि सरकार विभाग गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कर रही है कि कोटे पर हम क्या करेंगे। माननीय श्री विवेक ठाकुर जी। अन्नपूर्णा जी, माइक्रोफोन प्लीज। यस, धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। सर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि इस केंद्रीय विद्यालय के कोटा के संबंध में एक तरह तरह के मत कुछ दिनों से चल रहे हैं सर। ये बात स्पष्ट है कि सर व्याप्त रूप से सभी सांसद इस 10 के चलते सवाल दबाव में सर। लेकिन सर जब कहने का मतलब ये है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है सर। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय में सर, और 44,816 कर्मचारी है। अगर अनुपात देखें तो 32 छात्र पर 1 कर्मचारी होता है सर। वो प्यूपल और स्टूडेंट और टीचर रेशियो की भी बात हो रही है सर, लेकिन एब्रप्टली एंड करके वो टारगेट हम नहीं अचीव कर सकते सर। और यहाँ पे कोई जीडी गोयनका और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला माँ बाप नहीं आता हमारे यहाँ सर। हमारे यहाँ बस वही आता। एक मिनट सर मैं 2 उदाहरण देता हूँ सर। पेड़ के नीचे हमारे यहाँ सर दाढ़ी बनाने वाला जो है उसकी जाति भी नहीं पूछ सकता हूँ सर, वो गरीब है, इतना जानता हूँ। उसकी बच्ची पढ़ी सर, और बच्ची पढ़ी और बैंगलोर में गई सर। क्वेश्चन मेरा प्रश्न ये है सर कि जब इतने डिस्क्रिशनरी कोटा हैं और डीएम और कमिश्नर के हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उसको क्यों नहीं डाइवर्स करके सर अगर कोटा बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात सर, एक ही सवाल सर, मिनिस्ट्री कोटा लास्ट ईयर सर नील हुआ, सस्पेंड हुआ, एबॉलिश हुआ कि नहीं ये भी स्पष्टता भी नहीं। उसके पहले सर 12,295 एडमिशन हुआ। I'll have to move on. इतना लंबा सवाल नहीं। No sir, what I'm saying, एक सवाल divide it. If you divide it amongst all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, still it is an enhancement of 15 sir, and that is the need of the hour. Honorable Thank you Minister. sir. Honorable Minister. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच के साथ साथ सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं फिर से माननीय सदस्य से ये कहना चाहूँगी कि जो चिंता कोटा, जो आरक्षण, जो कोटा की चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि विभाग सभी तरह के कोटे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, और अभी सभी सम्मानित विद्वान हमारे सभी सदस्यों का हम जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी उन्होंने भी कहा है, सभी का राय लेंगे और सबके विचार विमर्श के उपरांत जो भी निर्णय आएगा विभाग निर्णय लेगी। धन्यवाद। थैंक यू। ऑन क्वेश्चन 291 डॉक्टर विकास महात्मे जी। डॉक्टर विकास महात्मे जी। क्वेश्चन 291। ऑनरेबल मिनिस्टर, please, I don't have it here, please. First supplementary. सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदया जी का कि जिन्होंने पॉक्सो लगाकर सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चिल्ड्रन का काफ़ी गिरावट आई है उसकी वजह से। उसी वक्त मैं ये पूछना भी चाहूँगा कि चाइल्ड मैरिजेस का जो ब्यौरा दिया है, स्टैटिस्टिक्स दिया है, उससे ये पता चल रहा है कि वो बढ़ रहा है। तो ये चाइल्ड मैरिजेस पॉक्सो के अंदर आएंगे क्या, और उसके लिए कितने मामले दर्ज हुए चाइल्ड मैरिजेस के पॉक्सो के अंदर, ये मैं मिनिस्टर। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज वही एक सामाजिक तरह से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और चाइल्ड मैरिज से माननीय हमारे संसद सभ्य भी डॉक्टर है, तो बच्चियों को सामाजिक एडजस्टमेंट करने, अर्ली प्रेगनेंसी आएगी और छोटी उम्र में बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से बच्ची पर भी बहुत इफेक्ट रहेगी। और अभी जो सर्वे बताए उसमें थोड़ा रेट प्रीवेल बढ़ाए, लेकिन उसके पीछे सामाजिक
जो सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है और अनेक फैक्टर्स है। और अभी अभी कोविड का एक एपिडेमिक पैंडेमिक गया, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड रिपोर्टिंग शायद कम होगी, क्योंकि चाइल्ड रिपोर्टिंग में बेसिकली क्या है, आसपास के पड़ोसी या तो जो लड़की अपनी दोस्तों के या तो उसके पेरेंट्स के द्वारा जो चाइल्ड मैरिज जो प्रोहिबिशन ऑफिसर उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो शायद इसकी वजह से या लॉकडाउन की वजह से ये इन्फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए ये मामले थोड़े ज़्यादा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। ये जो स्टैटिस्टिक्स चाइल्ड मैरिज का जो दिया है स्टेट वाइज, और हमें सबको पता भी है कि ये स्टेट्स जो देते हैं वही रिपोर्ट यहाँ दिया जाता है, लेकिन उसकी संख्या बाकी जो सर्वेज है उसके हिसाब से करीबन 24% है, लेकिन स्टेट का जो नंबर है वो बहुत कम है। और जैसे कि सबसे ज़्यादा इन्होंने जो बताया हुआ है वो कर्नाटक में है 184 मैरिजेस, और जब हमें पता है कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान में इसकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ उन्होंने बहुत ही कम लिखा। तो ये इसकी संख्या अप्रोप्रिएट आने से बराबर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी हम अपना पाएंगे। तो ये नंबर सही आने के लिए सरकार की तरफ से क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं? मिनिस्टर highlights a very, very major concern with regards to reportage. As the Minister of State has enunciated, the challenge is that the social factors that encompass the issue of child marriage are such complex, because the reporting has to be done against the parent of the child, or those who solemnize the wedding, or for that matter, those who attend such a wedding. And hence there is familial pressure to ensure that such reportage is understated. However, sir, the Ministry of Women and Child Development, in collaboration with the Ministry of Home Affairs, has been cognizant of this challenge and reaches out to every state government to ensure that not only are such cases reported, which finds a reflection in the NCRB, but also such marriages are prohibited. And that is why, along with the government, even commissions like the National Commission for Protection of Child Rights undertakes many awareness campaigns, particularly in high-burden districts, especially in aspirational districts, so that this challenge can be met in collaboration with society. माननीय डॉक्टर अमी याग्निक जी। Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honorable Minister what considerations have gone into giving this data, because the National Family Health Survey 5 has given a different data which you have given, which the reply is showing. In Gujarat, 31% of girls below 21 years get married. And the data also shows that every girl in 5 gets married below 18. Now, if this is the situation of child marriage, have you factored in two factors? Whether it is dropout rate in education and you have failed to give education, and second thing, that she is unable to get safety and security to get education till the age of 21. So is this are these the two factors which are increasing in child marriage? I would like to have a positive input on this, because that is the only way this menace can be curbed. Honourable Minister. The Honourable Member for having a constructive disposition with regards to this challenge. Yes, there is the anomaly that you so prescribe in your question needs to be challenged from two facets. One, that the data which has been prescribed in the answer given emanates from the NCRB data. However, what you enunciate is the National Family Health Survey, which you have articulated, and your concerns thereunder. It is, yes, a manifestation of certain concerns which find reflection in the NFHS, where we have found that girls between the age of 20 to 24, 23.3% such girls have been married before the age of 18. It is, yes, a fact that the NFHS 5 has pronounced now to the country that over 7% girls between the age of 15 to 19 have either given birth already or are currently pregnant during the duration of the survey. It is, yes, a fact that 10% risk of such girls dying at childbirth or during pregnancy exist. Yes, it is a fact that 51% girls who are uneducated will be married off as a child. But what I have articulated, sir, through you to the Honourable Member is this, that given the familial pressure to ensure that there is no reportage,
we have ensured that there is constructive dialogue through the district administration and state administration, particularly amongst communities and particularly during the seasonality of such a crime being committed. For instance, we know that a particular event which takes place during Akshaya Tritiya, there is an elaborate attempt to make sure child marriage is solemnized. And that is why on such particular occasions, we have through the Commission and the government ensured that there is an awareness done and reportage is thereunder done. But I would like to tell the Honourable Member that these issues have been duly considered when the amendment to the bill of child marriage was produced before the Parliament. Thank you. Honourable Shri Vinay Vishwamji. Thank you, sir. Sir, in part B of the answer, the Honourable Minister informed the House, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effects. Thank you. Sir, exception to Section 375 of the IPC is inconsistent with the provision of this POSCO Act. In that case, I can tell you, it sometimes even promotes even marital rape. So will you take the steps to overcome these intricacies or the difficulties in these questions? The fact that the Honourable Member would like to incite and elicit a response on the issue of marital rape when we are talking about the concerted efforts done by society at large in collaboration with governments on the issue of child marriage. I have stated my position vehemently in front of the Honourable Member in this very House on that said issue, and I think my position now rests. Honourable Dr. Fauzia Khanji. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, when we actually go into a village, we see that people, when we talk about child marriage, they tell us that keeping a girl doing nothing till the age of, say, 18 or 21 or whatever, we wouldn't want to do that because my daughter is not secure. The girl herself wants to get married. So I would like to ask the Honourable Minister, as Dr. Ami Yajnik has raised the point, how do we ensure that girls are kept occupied in some productive work, skill development, education, something which occupies their mind till they reach a marriageable age? The country marry because they are unoccupied, I think is an anomaly which needs to be corrected, and specifically young girls who choose marriage because they have nothing better to do. I hope that the member would retract that position. However, in terms of safety and security, I must here elicit a response from my department, which has successfully implemented the One-Stop Crisis Center program of the Honourable Prime Minister. Over 704 such crisis centers are currently operational in the country across all these districts. An additional 300 centers have been pronounced in the union budget recently. And I must here highlight to the Honourable Member that in collaboration with over 30 women helplines in the country, 7 million women have been provided safety, security, especially when they've been victims of violence. The government is committed to protect women and especially young girls from violence or, for that matter, insecure means in society that they are confronted with. Question 293, Shri P. Wilson ji. Oh, sorry, 292. Question 292, Shri Ravati Raman Singh ji. I'm sorry, Wilson ji. 292, sir. Honourable Minister. जवाब सभा पटल पर रखा है. First supplementary. माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि बेटियों का जन्म, उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विज्ञापन और उसके प्रचार प्रसार में बड़ा हिस्सा व्यय होता है। क्या इस योजना से समाज में कोई परिवर्तन आया है? देश में लिंगानुपात में कोई बदलाव नजर आता है कि नहीं आता? Honourable Minister. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सांसद सभ्य से बहुत ही एक्टिव है और ऑलवेज उसका कुछ न कोई स्टार या स्टार क्वेश्चन में ऑलवेज में उसका कोई न कोई प्रश्न का उसकी प्रेजेंस रहती है, इसलिए पहले तो उसका धन्यवाद मैं करता हूं। और साथ में ही
एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारी देश की बेटियों में सेक्स रेशियो का जो प्रमाण है बहुत ही कम हो जा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 में एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे क्या कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है वो कम हो और वुमेन और गर्ल्स एम्पावरमेंट हो और सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन हो और बच्चियों का सर्वाइवल बढ़े, प्रोटेक्शन बढ़े। इसकी वजह से ये स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद अभी 19% बढ़ोतरी जो बच्चियों का जन्म दर उसमें बढ़ोतरी है। 1000 मेल चाइल्ड में अभी करीब 938 अभी लड़कियों का रेशियो वो काफ़ी आगे आ गया है। तो ये स्कीम बहुत ही असरकारक हो रही है। आभार। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या लड़कियों को शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 फीस लेने की कृपा करेंगे, जिससे कि बेटियां आगे पढ़ के बढ़ सकें। आपकी अनुमति से माननीय सांसद श्री को बतलाना चाहूँगी कि जहाँ तक महिला और शिक्षा की बात है तो हमारे देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग ने स्वयं नाम का एक पोर्टल भी प्रतिस्थापित किया देश में, जिसमें अल्प मूल्य पर उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ये भी कहना उचित होगा मान्यवर आपके माध्यम से माननीय सांसद श्री को कि जहाँ तक पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा, एक चिंता व्यक्त हुई है कि जो बच्चियाँ शिक्षित होती हैं उनकी बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है। विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हमारा विभाग अब शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर देश में 5 लाख से ज़्यादा बेटियाँ जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको दोबारा स्कूल में प्रतिस्थापित करने के लिए कन्या प्रवेश उत्सव भी मना रही है। बेटियों और महिलाओं की शिक्षा पूर्ण रूप से संभव हो सके देश में, इसके लिए सरकार समर्पित है। माननीय रामीला बेन बारा जी। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मोदी सरकार बेटियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ कि आज देश भर में राज्यवार लड़के के सामने लड़कियों की स्थिति क्या है, सबसे गंभीर स्थिति कौन से राज्य में है? माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जब से लॉन्च हुआ है तब से प्लीज ये हमने देखा है कि 19% की बढ़ोतरी हुई है और जो स्टेट में कमी अभी भी है वो स्टेट का हम हमारे माननीय संसद सभ्य श्री को ब्यौरा अभी हम अपनी ऑफिस में बुला के अभी दे देंगे। थैंक यू। माननीय श्री विजय साई रेड्डी जी। The mic, yeah. Now it's on. Sir, as per Parliamentary Committee on Empowerment of Women, out of the total 447 crores released during 2016 and 19, 79% was spent on media advocacy. This is despite a clear laid down framework for utilization of funds. What are the reasons for such lopsided spending under this scheme? Sir, the honourable member, through you, should be informed that the scheme is such that district administration receives 50 lakh rupees from the government of India to propagate the cause of the girl child. It is at the discretion of the district administration to ensure that they can spend the money either on awareness campaigns or on campaigns with regards to education of young girls, or for that matter, emancipation and enhancement of their health benefits. And hence, given the spirit of cooperative federalism, we have engagement with state governments, appeal to state governments to ensure that the secretaries of the concerned department ensure that the money is well spent.
advocacy, as has been articulated by the Honorable Minister of State, has resulted in this becoming a Jan Andolan, so much so that the sex ratio at birth has increased by 19 points. So much so I would like to compliment states such as, let's say, Arunachal Pradesh, where for every 1,000 male births, you have an equivalent of girl child births. But we would like to Honourable Minister, time is over for the questioner. The House stands adjourned till 2 p.m.